Hello, good morning. Welcome to Live. I'm Sohini Patel from the Kanan Head Office, Baroda. Before starting today's live session, let me give you an insight about who we are. We are Kanan International Private Limited, India's premier visa consultancy service. We've been catering to sending students across to UK, USA, Canada, New Zealand, Australia since the past 24 years. We're also into coaching since the past 20 years. Very recently, we've developed e-learning and coaching platforms to train students who are wanting to study and make a career in foreign countries, which I mentioned before. We've also very recently again developed foreign learning programs, and in which we've initiated with our French program. Why we've started with French and why we've started with our e-learning portal? Because in these challenging times of COVID-19 situation, where students are finding it difficult to come to classes physically, we've developed this virtual learning platform wherein you can prepare for your tests, you can give your tests, and then you can start and speed up your application process to go and study in these foreign countries. Now when I say that we've started a French language initiation as a part of our foreign language program, we chose French because French is at present spoken than more than 300 billion people actually around the world. It is the national language of 29 countries. So you can actually understand the importance of French and how rapidly it is spreading in today's world, and how important it is to actually learn and know a foreign language in today's day and date. French also, if you see, is the procedural language of European Union. So a lot of these big organizations, namely EU, UNO, UNESCO, their procedural language is French. तो French का अपना एक बहुत ज़्यादा importance होता है, which is why we have started with French as our first foreign language program. French सीख के आप दूसरी languages भी बहुत easily सीख सकते हो. French forms a precursor for you. इसीलिए French. Now coming to the topic for today's live. The topic for today's live is how to score high in IELTS listening. Now as we all know, IELTS is International English Language Testing System. IELTS दो तरीके के होते हैं, IELTS Academic and IELTS General. IELTS Academic उन लोगों के लिए होते हैं, especially उन students के लिए होते हैं who want to go to UK, USA, Canada or any of these foreign countries to study for an undergraduate or postgraduate program. Wherein IELTS General is for those people who want to migrate, who want a PR or who want to go and settle in these countries. Now दोनों IELTS में 4 modules होते हैं: listening, reading, writing and speaking. Today we will be talking about IELTS listening, जो पहला task होता है जो आप encounter करते हो in your IELTS test. So the first section that you encounter in your IELTS test is the IELTS listening test, right? But the good news is that IELTS listening section जो होता है for academic and general IELTS दोनों के लिए same होता है. Both versions have the same IELTS listening section. इसका ये मतलब नहीं होता कि IELTS listening is easier than IELTS speaking या IELTS writing या IELTS reading. In fact, IELTS listening जो है it moves on very rapidly and at a very fast pace, so you need to have a lot of concentration skills. Not just concentration skills, a strong grasp of your English language as well as very strong time management skills होना चाहिए आपके पास when you're actually going through your IELTS listening test. Now there are a number of ways जिसके through आप IELTS listening test में success पा सकते हैं, आप ace कर सकते हैं IELTS listening test को. Some tips मैं आपको अभी बताऊंगी. Starting with सबसे first and foremost tip ये होता है that you should know the sections and practice them. Know the section से मेरे कहने का मतलब है IELTS listening section अपने आप में 4 sections में divided होता है, which break down as section 1. Now section 1 में क्या होता है? There are 2 speakers, so there is usually a telephonic conversation featuring everyday conversation. ठीक है? Possible scenarios may include booking a table at a restaurant, renting an apartment or planning a trip. Questions focus on key information such as date, place, name, etc. Section 4 होता है जिसमें section 2 होता है जिसमें 1 speaker होता है. So it is usually a monologue focusing on again everyday social situation.
Questions include diagram labeling, table completion and multiple choice questions. सेक्शन 3 जो होता है, अगेन उसमें 3 और 4 स्पीकर्स होते हैं. द टॉपिक इज एन अकेडमिक सब्जेक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड द क्वेश्चंस में इंक्लूड फिल इन द ब्लैंक्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एंड सेक्शन 4 अगेन उसमें 1 स्पीकर होता है. सो द मोनोलॉग इज ऑन एन अकेडमिक सब्जेक्ट एंड there is no break in the middle. When you talk about section 4, there is no break in the middle. It goes on continuously and the questions include fill in the blanks and table completion. Now when you say that you should know about the sections and practice them, you should also know that ये जो sections होते हैं ना, they are designed in such a way that with each section the difficulty will increase, right? So अगर first section सबसे easy है तो fourth section सबसे ज़्यादा difficult होगा because it goes on increasing gradually. नाउ अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो इस तरीके से डिज़ाइन होते हैं कि आपको ये सीखने में या ये प्रैक्टिस करने में मदद मिले. नाउ द सेकेंड टिप वुड बी देयर आर नो रिपीट्स, सो पे अटेंशन, राइट? जब आप आइल्स लिसनिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करते हैं, जब आप प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग सुनते हैं, तो आप उसमें बहुत सारे ऑडियो ऑल्टरेशंस कर सकते हैं. आप प्ले कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड, फॉरवर्ड, यू कैन डू एनी ऑफ दीज. देयर आर अ लॉट ऑफ ऑडियो ऑल्टरेशंस अवेलेबल फॉर यू. But the same rules don't apply in your actual IELTS listening test. तो जो आपके listening skills होते हैं, जो आपके listening senses होते हैं, they have to work over time so that you don't miss out on anything. इसीलिए बहुत important है कि जब आप IELTS listening की practice कर रहे हैं, जब आप practice recording सुन रहे हैं, make sure आप एक ऐसा टेस्ट दे जहाँ पे आपने पूरी रिकॉर्डिंग में कभी भी कोई ऑडियो ऑल्टरेशन नहीं किया. Let it go on for one entire go and one entire set. ऐसा प्रैक्टिस करें जब आप 30 to 40 मिनट्स तक ऑडियो रिकॉर्डिंग को स्टॉप ना करें, ताकि आपको एक प्रैक्टिस मिल जाए ऑफ हाउ यू विल बी एबल टू डू द IELTS लिसनिंग टेस्ट व्हेन यू एक्चुअली अपीयर फॉर वन, राइट? देन रीड द क्वेश्चंस केयरफुली. ऑब्वियसली ये एक बहुत ऑब्वियस टिप है कि क्वेश्चंस को बहुत केयरफुली आपको पढ़ना है. ये टिप this may sound very very obvious कि questions तो obviously everybody reads carefully, but you know sometimes there are a lot of limitations in the form of questions. कहीं कहीं ऐसे questions होते हैं where you know yes आपको आंसर देना है पर आप ट्रू दे देते हैं, फॉल्स आंसर देना है पर आप नो दे देते हैं, विच इज़ वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली. समटाइम्स क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं दे हैव इंस्ट्रक्शंस लिमिटिंग टू नंबर ऑफ वर्ड्स. कितने क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर डिलीवर्ड, जहाँ पे लिखा रहता है नो मोर देन 2 words. You have to be very careful when you're answering such questions, because if you exceed the word limit, if you exceed what is asked for you from you, then you are likely to not score points for that particular questions. Then write your answers on a question paper in case of paper delivered IELTS, and or quickly start jotting down your answers in on the screen when you're talking about computer delivered IELTS. Now obviously the 4 recordings जो चलती है, the 4 audio tracks जो चलते हैं, they go on for a period of 30 to 40 minutes and it is very important. अगर आप पेपर डिलीवर्ड IELTS दे रहे हैं तो क्वेश्चन पेपर में आप फटाफट तब आंसर्स नोट डाउन करते रहिए. ऑब्वियसली क्वेश्चन पेपर में अगर आप आंसर्स रहने देंगे तो आपको स्कोर नहीं मिलेगा. सो इन दी एंड, इन टर्म्स ऑफ पेपर डिलीवर्ड, आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स दी जाती है टू ट्रांसफर योर आंसर्स, एंड इन केस ऑफ कंप्यूटर डिलीवर्ड आपको अगेन एक्स्ट्रा 2 मिनट्स एंड में दी जाती है टू रिव्यू योर आंसर्स. नाउ कंप्यूटर डिलीवर्ड में आप क्या कर सकते हैं कि जैसे जैसे आप ऑडियो ट्रैक सुन रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन फटाफट आंसर दे पा रहे हैं, आप उसका फटाफट आंसर रिस्पॉन्स टाइप करते चले जाइए, ताकि एंड में आप यू डोंट वेट फॉर दैट टाइम टू ट्रांसफर योर आंसर्स, या आप एंड में ये बैठ के नहीं सोचे कि उसका क्या आंसर था. इसीलिए जब जो आंसर मिल रहा है तब वो टाइप इन करते जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. एज इन व्हेन यू गेट द आंसर टू एनी क्वेश्चन, कीप रिकॉर्डिंग इट, कीप पुटिंग इट इन, सो दैट इन द एंड यू डोंट हैव टू वेट टू एक्चुअली थिंक थ्रू, क्योंकि इतना टाइम होता नहीं है. So you have to be very very proactive. You have to be very very, the time management that you're doing when it comes to IELTS listening test is very very important. Now also जैसे कि मैंने बताया कि 4 सेक्शंस प्ले होते हैं. इन पेपर डिलीवर्ड तो आपको एंड में 10 मिनट्स मिलते हैं, इन कंप्यूटर डिलीवर्ड एंड में 2 मिनट्स मिलते हैं, और हर सेक्शन के बीच में भी आपको 30 सेकेंड्स दिए जाते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि यू get a hang of how to transfer your answers in terms of जो सही है और जो गलत है. और लास्ट का जो टाइम होता है उसमें आप ऑफ कोर्स बैठ के रिव्यू कर सकते हैं of whether you've
entered the correct answer or no. Now the next tip that I would be sharing with you is that spelling counts. Don't worry about it until the end. Now जब आप responses टाइप कर रहे हैं या responses लिख रहे हैं, स्पेलिंग्स ऑब्वियसली अगर आप गलत स्पेलिंग लिख देंगे तो दैट आंसर विल बी मार्क्ड एज रॉन्ग कंप्लीटली. बट उनको उस स्पेलिंग मिस्टेक या स्पेलिंग चेक को आप शुरू से मत उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए. कीप इट एज अ रेफरेंस पॉइंट टिल द एंड. Spellings, of course, are very, very important, but don't worry about typos in general from the very beginning. Make sure that spelling mistakes or typos को आप last में correct करिए. And the very last tip would be ready for different accents. Now क्या होता है, the speakers in IELTS listening recordings have native English accents. जब आप IELTS listening recordings सुनते हैं तो native English accents को आप बहुत ज़्यादा बार you will come across native English accents. However, जो IELTS test होता है, that is an international test and it does not change between countries. So you will encounter a variety of different accents. These accents may include North American, which again includes Canada, Northern USA, Southern USA, UK, Northern UK, Southern UK, Wales, Scotland, and Southern Hemisphere, which includes Australia, New Zealand, and Africa. Sometimes even native speakers on accents को नहीं समझ पाते. So it is very important that you on a daily basis, before you appear for your IELTS listening test, listen to podcasts, listen to Hollywood music, listen to Hollywood movies, listen to movies of different regions. उससे क्या होता है, and listen to podcasts, go to BBC, listen to news. इससे you will get yourself acclimatized to that particular accent. आपको उस accent से आप इतनी familiar हो जाओगे that when you listen to it in an actual IELTS test, आपके लिए वो different नहीं होगा. It will not be very foreign for you, क्योंकि आप already उसको सुन चुके हो. You know what it sounds like. You know उनके vowel sounds कैसे, उनके linguistic quirks कैसे, क्योंकि यही चीज़ें हैं जो आखिर में आपको confuse कर देगी. Obviously, you will not encounter any very very thick accents, but obviously इन सब का एक idea पहले से हो तो it will very much help you in your IELTS listening test. I just shared a few tips about how to score high in IELTS listening test. Now, if you have any queries regarding the same, you may reach out to our counselors or come to our head office anytime between 10 a.m. to 7 p.m. The names and numbers of our counselors are mentioned in the chat box. We'll be very, very happy to help you. We have these live sessions arranged for you every day so that you can come and get yourself acclimatized, get yourself accustomed, and get some more knowledge about send abroad tests, their importance, their structure, their benefits, their format, etc. Thank you so much for listening patiently to today's live session, and see you next time.